Good morning to all of you. My dear students, it's class 8th subject social science. Today our topic is British policies after revolt 1857. This is our topic today. My dear students, as you already know that the revolt 1857, the causes of the revolt 1857, so there were so many causes that the revolt occurred in India in 1857. Social causes, religious causes, political causes, military causes, economic causes, socio-economic causes, so many causes behind the revolt 1857. That is why the revolt occurred, or some historians call it as the first war of independence. First war of independence of India against Britishers. Now, after the revolt 1857, the revolt was suppressed. The revolt was suppressed by the Britishers, by the British Army, by the British East India Company, and the British Lords. It was suppressed, and there were so many causes why the revolt 1857 failed. There was no unity among the Indians at that time. There was no good leadership was not so much and so good that they can fight against the Britishers to India should become independent in 1857. There was no military power in India. There was no weapon in army, Indian army. इनके पास कोई वेपन नहीं था, इनके पास कोई अच्छा सा लीडर नहीं था इंडिया के पास. और यहाँ पे जो बीच में हिंदू मुस्लिम या सिख वगैरह जो थे, इनकी आपस में इतनी अच्छी यूनिटी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी उस वक्त. इस वजह से ये जो रिवोल्ट 1857 जो था वो फेल हुआ. अब उसके बाद रिवोल्ट 1857 के बाद जो पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स दे चेंज, सम चेंज ऑकर इन द ब्रिटिशर्स पॉलिसी के. इसकी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ गई, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. हाँ, आफ्टर द रिवोल्ट of 1857, the British government introduced many reforms in its administrative policies in order to prevent the occurrence of any such revolt in future. The new policies include the Britishers after 1857. The Britishers included some new policies, so that there should be no such a revolt once again during the British period in India. यानी दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा न हो, कोई रिवोल्ट दोबारा वजूद में न आए. इस वजह से ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज जो है वो चेंज की और कुछ न्यू पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की. सम पॉलिसीज वायर एज नंबर 1, चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन. Number 1, by the Act of 1858, the power of the government of India was transferred from East India Company to British Crown. Now, by the Act of 1858, the power to govern India. हाँ, 1857 के बाद 1858 का एक एक्ट बनाया गया. उस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश जो इंडिया जो था, इंडिया वाज डायरेक्टली नाउ अंडर द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश. अब ये डायरेक्टली क्राउन ऑफ द ब्रिटिश के अंदर चला गया. इससे पहले यहाँ पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही यहाँ पे गवर्न कर रही थी, वही यहाँ इंडिया के ऊपर जो है वो पॉलिसीज बनाती थी. नाउ इट चेंज. Number 2, the provincial decentralization began. During this time, Lord Mayo separated the central and provincial finances. हाँ, लॉर्ड मेयो जो था, decentralization began during this time. Decentralization means that
There were given some powers to the provinces. कुछ अधिकार दिए गए, किनको दिए गए? जो प्रोविंसेस थे उनको दिए गए। और साथ साथ में जो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुई, किसके हवाले से? लोकल गवर्नमेंट जो थे, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट जैसे प्रोविंशियल फाइनेंस, उनको कुछ फाइनेंशियल इख्तियारात भी दिए गए। नंबर 3, लोकल बॉडीज के मुतलिक, लोकल बॉडी प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट थ्रू, लोकल गवर्नमेंट थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट बॉडीज प्रमोटेड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको प्रमोट किया गया, उनको कुछ अधिकार दिए गए, लोकल गवर्नमेंट को कुछ इख्तियार दिए गए, उनको प्रमोट किया गया लोकल गवर्नमेंट को थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज and through the district bodies, my dear students. Number 4th one is change in the army. Punjabis, Gorkhas and Pathans were recruited in the army in a large number. Punjabis were recruited, Gorkhas were recruited, and some Pathans were also recruited in the army in a large number. Before 1857, it was seen that they were not recruiting so much Punjabis, Pathans and other Gorkhas in the army, and the higher posts were not given to Indians. Now, the one more point is public service. Public service. Indians were excluded from bureaucracy. Entry in civil service was reduced from 23 to 9 years age in 1878. पब्लिक सर्विस में अब यहाँ पे एक मसला बन गया। पब्लिक सर्विस में इनको जो इंडियंस जो है उनको एक्सक्लूड किया गया, उनको पब्लिक सर्विस में नहीं लाया गया। और वंस अगेन दिस वाज बाइस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स द इंडिया एंड